अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 8 मोशन। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, what is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph? Answer: distance, magnitude of displacement covered by the object in a given interval of time is measured by the area occupied below the velocity time graph. If the object is moving with uniform velocity, the distance traveled by it between time t1 and t2 would be represented by the area ABCD in the velocity time graph. S is equal to area ABCD is equal to area of rectangle ABCD is equal to velocity multiplied by time is equal to AB multiplied by BC. इस क्वेश्चन को मैं अभी आपको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे ऑक्युपाइड एरिया से हम ऑब्जेक्ट के द्वारा एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कवर की गई डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो टाइम t1 एंड टाइम t2 के बीच में ट्रेवल की गई डिस्टेंस को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया ABCD के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। If you like our video, please share and subscribe.